Welcome, dear students. Hope you are fine. So, welcome once again. As you know, we are discussing about the iron steel plants, iron and steel plants. So, these iron and steel plants are one of the most important industries in our country and in the world. These are known as the large scale industries, and these industries are also said to be a backbone of other industries, because these industries, as you know, I earlier told you, these providers the this raw material to the other industries. These are this actually these industries की अगर हम बात करेंगे तो ये इंडस्ट्रीज आप देखो, जो इनका प्रोडक्ट होता है आयरन स्टील, जो स्टील ये एलाई बना के दे, वो अदर इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल, तो इसलिए बाकी इंडस्ट्रीज वजूद में आती है जब इनको ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर। तो हम इनको बैकबोन भी बोलेंगे या हम इनको बोलेंगे दीज फीडर इंडस्ट्रीज। और इन इंडस्ट्रीज को आप देखो वर्ल्ड में आज देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो इन अर्लियर क्लास मैंने आपके साथ डिस्कस किया है दिस आयरन स्टील प्लांट, दैट इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आयरन स्टील प्लांट, दैट इज द टिस्को। अगर हम टिस्को की बात करेंगे या हम जमशेदपुर आयरन स्टील प्लांट इसका दूसरा नाम है, तो ये पहला कंट्री में एक आयरन स्टील प्लांट है जो इंस्टॉल किया गया है हमारी कंट्री में एट दिस साक्षी इन दिस झारखंड। अगर हम देखेंगे झारखंड में इसको साक्षी के प्लेस पे एस्टेब्लिश किया गया, और ऐसा इसको एस्टेब्लिश करने वाले एक्चुअली पर्सन का नाम टाटा जमशेद जी था, तो जिसकी वजह से जहाँ पे इसको लोकेट किया उस एरिया का नाम साक्षी के बदले में यार रिप्लेस भी हो चुका है, आज उसको जमशेदपुर बोला जाता है। तो क्योंकि वहां पे उसको बोला गया जमशेदपुर आयरन स्टील प्लांट, तो एरिया का नाम इस प्लांट की वजह से जमशेदपुर पड़ गया है, तो इसलिए हम इसको जमशेदपुर भी बोलते हैं इस एरिया को, और जमशेदपुर आयरन स्टील प्लांट। तो इसी का दूसरा नाम है टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, और ये प्राइवेट ओनर है। और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इसको भी यानी इनिशिएटिव्स कुछ दिए, इसको इंसेंटिव्स दिए, तो ये फर्दर डेवलप हो चुका है। और ये उसने साक्षी के प्लेस पे इसको क्यों एस्टेब्लिश किया, तो यू नो बिकॉज एंजॉयज द लोकेशनल फैक्टर्स, क्योंकि साक्षी जो प्लेस है जमशेदपुर प्रेजेंटली, तो डेट एंजॉयज द लोकेशनल, एक फैक्ट्री के लिए एक इंडस्ट्री के लिए जो लोकेशनल दीज फैक्टर्स अवेलेबल होनी चाहिए, तो साक्षी एंजॉय कर रहा है, साक्षी को वो अवेलेबल थे। दैट इज द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, दैट इज द सुबाना रेखा एंड कारखाई रिवर्स, एंड बियॉन्ड ऑफ दिस दिस साक्षी वाज क्लोज टू दिस railway track only 30 Kalimati station 32 kilometers, and beyond of this more or this that the Sakchi has the wide market in the Kolkata, and beyond of this this Sakchi has the nearest coal mines as well as the iron ore in Chhattisgarh, Orissa Vagera. There are the rich iron depositors as well as the coal. So this Sakchi was chosen at that time for the establishing the iron and steel plant. So now today we are going to discuss about the one more steel plant of that is the USA का हम स्टील प्लांट बोलेंगे, उसको बोलते हैं पीटर्सबर्ग आयरन एंड स्टील प्लांट। सो एज यू नो दिस तरफ जमशेदपुर एक सिटी है, एक टाउन है हमारी कंट्री में, तो जहां पे वो लोकेट है उसको बोला जमशेदपुर आयरन स्टील प्लांट। सो हियर इन द पीटर्सबर्ग सिटी there is the important iron steel plant that is known as Pittsburgh iron steel plant. तो इस पीटर्सबर्ग सिटी को हम बोलते हैं आयरन सिटी ऑफ दिस, और वी कैन से स्टील सिटी ऑफ यूएसए, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द लार्ज अमाउंट ऑफ स्टील। ये लार्ज यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टील वर्कर्स है, स्टील प्लांट्स है, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द स्टील सिटी ऑफ दिस यूएसए। सो विच सिटी इज नोन एज स्टील सिटी, दैट इज द पीटर्सबर्ग वे, एंड दिस पीटर्सबर्ग स्टील प्लांट एंजॉयज द लोकेशनल एडवांटेजेस। सो अगर हम बात करेंगे पीटर्सबर्ग की, तो इसमें हम देखेंगे ये भी एंजॉय कर रहा है साक्षी की तरफ बहुत सारे दिस लोकेशनल फैक्टर्स, या हम इसमें बहुत सारे लोकेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थे। सो दे दिस एट दैट टाइम दे डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश द स्टील प्लांट्स इन द पीटर्सबर्ग, बिकॉज पीटर्सबर्ग हैज द लोकेशनल एडवांटेजेस। पीटर्सबर्ग में आप देखो अपॉर्चुनिटीज, लोकेशनल एडवांटेजेस की बिना पर आप देखो यहाँ पे बहुत सारे आयरन स्टील प्लांट्स को एस्टैब्लिश किया गया। सो फर्दर अगर हम बात करेंगे तो कौन से इसको लोकेशनल या फेवरेबल फैक्टर्स अवेलेबल थे, सो दैट वाज द पीटर्सबर्ग वाज चोजन फॉर द एस्टैब्लिशिंग द आयरन एंड स्टील प्लांट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस which these factors, which advantages, which locational advantages were available at Pittsburgh, so that Pittsburgh was chosen to set up the iron steel plant. So some of raw material is available locally, जो important factor है that is the availability of raw material, you know. So this raw material was locally available.
सम ऑफ, यानी अगर हम देखेंगे पूरा का पूरा नहीं है बट सम ऑफ रॉ मटेरियल, some amount of raw material was locally available in the Pittsburgh. So Pittsburgh, particularly coal was locally available. So the coal is the one of the most important raw material for the iron steel plants, for the melting and smelting of ore. That is the lowering this melting point of this iron ore. So coal is important, and it is also as a fuel to run the machinery and other things. So this coal was locally available. So this is the first factor, that is the raw material was available. And while iron ore comes from the iron mines of Minnesota, जो iron ore इसका था वो Minnesota से इसको available होता था, लेकिन Minnesota इसको यानी locally ज्यादा भी available नहीं था. 1500 किलोमीटर्स जो इस पिट्सबर्ग को आयरन ओर की रॉ मटेरियल को फुलफिल कर रहा है. तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे माइनेसोटा बहुत ही दूर है. तो 1500 किलोमीटर्स आप देखो बहुत ही दूर है. इतने दूर से आप देखो रॉ मटेरियल को, जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है कोल है, उसके बाद आयरन ओर है एक आयरन स्टील प्लांट के लिए. तो कोल वाज लोकली अवेलेबल एंड दिस आयरन ओर वाज आल्सो अवेलेबल, बट 1500 kilometers situated from this these Minnesota mines and the Pittsburgh steel plant has a difference of at a distance of they are apart from each other 1500 kilometers. So 1500 kilometers, so transportation charges ज्यादा आएंगे. रॉ मटेरियल एट दैट साइड पिट्सबर्ग साइड पे एक्सपेंसिव होगा. तो फिर ये क्यों इन्होंने इसको चूज किया, लेकिन इसके लिए एक और अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थे. बिटवीन दिस माइनस एंड द पिट्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रोड्स फॉर शिपिंग. सो लेकिन यहाँ पे आप देखो अगर जो डिस्टेंस ज्यादा थी, लेकिन इनके बीच में पिट्सबर्ग और माइनेसोटा माइनस में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट था. तो बिकॉज ऑफ दिस वाटर ट्रांसपोर्ट दिस रॉ मटेरियल आयरन ओर, यानी जो आयरन ओर इसको अवेलेबल था, आयरन ओर वाज दिस चीपली अवेलेबल एट दैट साइट, एट द पिट्सबर्ग साइट, एट दिस वेरी साइट. दिस आयरन ओर वाज though they have a distance, they are apart from 1500 kilometers each other, but there is the another opportunity, that is the water transport. Cheap transport was available. So that is why this Pittsburgh was chosen, because at that site, Pittsburgh plant, there was the availability of cheap water transport, and because in between the Minnesota mines and that wire from the iron ore is extracted, and this Pittsburgh plant, there is the world best shipping route. अगर हम world shipping routes की बात करेंगे तो उनमें एक world best shipping route जो है उनमें वो between Minnesota और Pittsburgh के बीच में से गुजर रहा था. तो जिसकी वजह से आप देखो इसको रॉ मटेरियल चीपली अवेलेबल था, इसको रॉ मटेरियल की शॉर्टेज नहीं होती थी. तो जो आयरन और इसको फुलफिल नहीं कर रहा वो माइनेसोटा माइनस से, और माइनेसोटा माइनस कितने दूर थे पीटर्स, 1500 किलोमीटर. लेकिन इतना दूर क्यों था, लेकिन बिटवीन दीज टू देयर इज द वर्ल्ड बेस्ट शिपिंग रूट, एंड दिस थ्रू दिस शिपिंग रूट, थ्रू दिस बेस्ट शिपिंग रूट, दिस आयरन ओर वाज फ्रॉम द माइनेसोटा वाज ट्रांसपोर्ट थ्रू दिस waterways, through this best shipping route to this at that site, at that plant. So this is the because that this Pittsburgh was chosen for the installation of, for the establishing of this iron and steel plant. Now one more thing, that is the between these Pittsburgh and this Minnesota mines, there is the world best this route, and also there is the Great Lakes. There are the Great Lakes situated between these two. So these Great Lakes provides this water transport availability, so they can transport this iron ore cheaply to at that site, and also export the goods through these Great Lakes. So this Pittsburgh enjoys the locational advantages. So this Pittsburgh's plant has the enjoys the location, that is the transportation, that is the transportation of raw material, and this disposal of these finished goods. One more thing, that is the disposal of finished goods. So these Great Lakes, through these waterways, through these world best roads. So one plant, this industry should have availability of transport to disposal of goods, to input of raw material, and one more thing, that is the availability of raw material. So raw material was easily available, some raw material was locally available, and some of raw material comes from the Minnesota mines, but the distance, though distance was this enough, but the one more thing, that is the water transport available, because the Great Lake situated between Pittsburgh and the Minnesota provides the cheap transportation of raw material to this from Minnesota to the Pittsburgh. And one more thing, that is the this Pittsburgh
plant also uses this world best shipping route, which is for this disposal of, for this export of this products to the other parts of the country and to the other international, to the for the foreign trade. And this also there are the some great lakes situated between the Petersburg and this Minnesota mines. Yeah, these lakes help us to transport these, to import export this material, to input of the raw material, to transport of the raw material, and also this export of this finished these goods. And we can say that is the finished good, that is the iron or steel. So great lakes, these are the actually few lakes, these are the few lakes which are known as the great lakes. And generally there is the great lakes, there is the number of great lakes, five. So there are the five lakes situated between these five lakes are situated. As you know, lake is the water body, inland water body. This standing inland water body, that is the ocean, is also this standing water body, but that is not inland water body. And as compared to ocean, has the largest dimensions with respect of this length, breadth, and we can say depth. But lake is the this in smaller dimension as related to ocean, and this is the inland water body. So there are this some great lakes. These are these five or four great lakes are known as the great lakes, and the name of these great lakes are namely Lake Superior, Superior Lake, and one more thing, that is the Huron, Superior Lake, Huron, Ontario, Ontario, and Michigan, Michigan, and Erie. So listen, beta, Superior Lake, Huron Lake, Ontario Lake, and Michigan and Erie Lake. These are the five lakes, and together these five lakes are known as the Great Lakes. So these Great Lakes are situated between these mines and this around this city of this USA, or we can say that is the Pittsburgh plant. So these Great Lakes provides this transport facility, fulfills the plant has this need of the transport facility. So this transport facility is fulfilled, this water transport facility, this cheap transport facility is fulfilled by these Great Lakes. So this that is why this plant enjoys the locational advantages. इस प्लांट को लोकेशनल एडवांटेजेस थे, तो जिसकी वजह से पीटर्सबर्ग को चूज किया गया टू एस्टेब्लिश द स्टील प्लांट, क्योंकि ये कौन कौन सा एडवांटेज एंजॉय कर रहा था? ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी इसको थी, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल थी, और उसके बाद अगर हम देखेंगे वाटर की भी अवेलेबिलिटी इसको इस प्लांट को थी। तो जिसकी वजह से एक प्लांट को लोकेशनल एडवांटेजेस अगर अवेलेबल हो, वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो व्हाट आर these great lakes? These are the generally five lakes in the USA. Together these five lakes are known as these Great Lakes, and namely the Great Lakes, that is the Superior, Huron, Ontario, Michigan, and Erie. So these are the situated between this Minnesota and this Pittsburgh plant, and these Great Lakes are used for this transporting input of raw material through these the Great Lakes. The Pittsburgh plant this fulfills the need of this raw material and also export this product to the other parts of this nation. So that is why this plant enjoys the transport facility by the Great Lakes. And one more thing, this plant, these trains carry the ore from the Great Lakes to the Pittsburgh area. So उसके बाद हम देखेंगे जो trains carry the iron ore to the plant, yani then after. So when this iron ore is this placed at this ports, यानी जो ग्रेट लैक्स के पोर्ट्स होते हैं, वहां पे आयरन ओर को आप देखो यहाँ पे लाया जाता है, उसके बाद यहाँ से ट्रेन से इसको प्लांट तक कैरी कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट इज दिस एट दैट साइड इसको चीपली रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। उसके बाद जो बाकी आप देखो प्लांट तक डिस्टेंस है, उसको ट्रेन के जरिए कैरी किया जाता है, या बाकी अदर दीज ट्रक्स वगैरह के जरिए इसको किया जाता है। तो फ्रॉम द ग्रेट लैक जब ओर को ग्रेट लैक्स तक पहुंचा जाता है, और उसके बाद दीज पोर्ट्स से लेके आप देखेंगे ग्रेट लैक से लेके ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लैक्स टू द पीटर्सबर्ग एरिया, द ओहियो। और वन मोर थिंग दैट इज द इंपॉर्टेंस, एक प्लांट को चाहिए फॉर द स्मेल्टिंग, फॉर द कूलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज द वाटर नीड। तो एक है ओहियो, Ohio river, and one more thing, Ohio river, that is the Mono Gehla river, Mono
Monongahela River, and one more thing, Allegheny River. Ohio River, Monongahela River, and the Allegheny River. So you see that in the earlier, that is the transport facility was available, water transport as well as the railway transport available. So this Petersburg is successful, and one more thing, raw material was also available, and beyond of this, that is the plant have need the, that is the water. So this Ohio River, Monongahela River, and Allegheny River provides the water for the manufacturing of iron and steel. So this plant has the water facility also available, and also market was also available, and beyond of this, water adequate water supply was available. So this plant enjoys the locational factors. That is why the Petersburg was chosen, because at that site, at this very site, there was the locational factors available, and almost every locational factor was available. So the Petersburg becomes the steel city of important iron and steel producing city of the USA. Today very few the largest steel mills are in the Petersburg itself. So अगर हम देखेंगे आज की, अगर हम बात करेंगे टुडे, तो आज के दौर की हम बात करेंगे, फ्यू ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मिल्स आर इन द पीटर्सबर्ग इटसेल्फ। बहुत सारे अगर हम देखेंगे जो यूएसए के हम देखेंगे बड़े बड़े स्टील मिल्स है, स्टील प्लांट्स है, वो पीटर्सबर्ग में ही सिचुएटेड है। आपको पता है क्यों सिचुएटेड है? लोकेशनल फैक्टर्स इसको अवेलेबल है आर इन द पीटर्सबर्ग। दे आर लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ मोहनोगेला। और अगर हम देखेंगे पीटर्सबर्ग में, अगर हम देखेंगे कहां पे है, वैली ऑफ मोनोगेला, जो आपको अपने भी रिवर देखा, मोनोगेला रिवर, यानी जहां से एक रिवर पास होता है, ये वैली ऑफ मोनोगेला रिवर है, जो रिवर वैली है, यानी अराउंड दिस मोनोगेला रिवर। इसमें बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे आप देखो, बहुत सारे प्लांट्स हैं, और बहुत सारे आप देखेंगे यहाँ पे आप देखो एस्टेब्लिश किए गए हैं इन द पीटर्सबर्ग के वैली ऑफ मोहनोगेला के इर्द गिर्द है बहुत सारे लार्जेस्ट स्टील प्लांट्स है। क्योंकि आपको पता है इस एरिया में आप देखो लोकेशनल फैक्टर्स, रॉ मटेरियल और बाकी चीजें जो एक प्लांट के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद one more thing, that is the this मोहनोगेला एंड एलिगेनी रिवर, और एक और हम देखेंगे गहनी रिवर। एलिगेनी रिवर के इर्द गिर्द बहुत सारे आप देखो आयरन स्टील प्लांट्स है, यानी एक स्टील प्लांट पीटर्सबर्ग में नहीं है, बहुत सारे आप देखो जितने यूएसए के अगर हम बात करेंगे आयरन स्टील प्लांट्स की, तो उनमें आप देखो लार्जेस्ट वन ऑफ द अदर सिटीज में भी है, लेकिन ज्यादा आप देखो कंसंट्रेशन जो है, सो दैट इज इन द एलिगेनी रिवर, यानी इन द एलिगेनी रिवर एंड अबव द पीटर्सबर्ग, सॉरी दिस इन द मोनोगेला रिवर एंड इन द एलिगेनी रिवर अबव पीटर्सबर्ग एंड अलोंग द ओहियो रिवर बिलो। और उसके बाद आप देखो Ohio River, that is the, these are the this areas of Pittsburgh along the valley of Monongahela, along the Allegheny River and Ohio River के इर्द गिर्द आप देखो largest iron steel plants है, that is why it is known as the iron and steel city of the USA। so अगर आपको पूछा जाएगा कहाँ कहाँ पे ये situated है, पीटर्सबर्ग में iron and steel plants, इसको steel city, और in the valley of Monongahela few steel plants, उसके बाद Allegheny में भी आप देखो along the Allegheny River है, और Ohio River के इर्द गिर्द बहुत सारे iron steel plants है। Finished steel is transported to the market by the both land and the water route। So as you know that this area enjoys the world best shipping route। इस एरिया को आप देखो shipping route available है, Great Lakes availability of water through the water transport as well as through the road transport। This steel is transported to the other rest of nations and to the rest of nations। And one more thing, यानी अगर हम देखेंगे जो प्रोडक्ट को डिस्पोजल चाहिए, जो हमें प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए हम रेल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और रोड ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स आर स्टेबल। द पीटर्सबर्ग एरिया has many factories other than the steel mills। अब देखो you know that is the when there is the steel plant anywhere, there is a steel plant established and there is emerging अदर इंडस्ट्रीज। आप देखो वहां पे अदर इंडस्ट्रीज भी इमर्ज हो रही है। तो क्योंकि एक प्लांट, अगर एक आयरन स्टील प्लांट एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो इस प्लांट के इर्द गिर्द आप देखो बहुत सारे अदर इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल पे डिपेंड होते हैं इस पे,
जिनका रॉ मटेरियल आयरन स्टील प्लांट से, जो बेसिक इंडस्ट्री, यू नो दैट इज द आयरन एंड स्टील प्लांट इज अ बेसिक इंडस्ट्री, इट इज नॉट द कंज्यूमर इंडस्ट्री, बट दोज इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश इमर्जिंग अराउंड दिस आयरन स्टील प्लांट because they have the need of raw material which is fulfilled by the iron and steel plant. So as you know, for example, locomotive industries, they have the, for the locomotive, for the manufacturing of automobiles, they use the iron and steel. I can say that is the lock industry, for the manufacturing of locks they can use the iron and steel, and many other industries, rail industries, many agricultural tools industry, and the other industrial tools, automobile tools, and beyond of this lot of construction, these tools etc, जो भी आयरन स्टील प्लांट से हम टूल्स मशीनरी एटसेट्रा बनाते हैं, वो सारे के सारे इंडस्ट्रीज इसके इर्द गिर्द वजूद में आते हैं, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए। उनको अब ये रॉ मटेरियल, इसको रॉ मटेरियल चाहिए आयरन और कोल, तो यहाँ पे इर्द गिर्द अगर कोल आयरन रॉ मटेरियल अवेलेबल, माइनिंग अवेलेबल है, तो आयरन स्टील प्लांट वजूद में आया। इनको चाहिए आयरन एंड स्टील फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स, तो ये इसके इर्द गिर्द, तो जिसकी वजह से बन जाता है इंडस्ट्रियल रीजन। व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर established close to each other, you know, in the earlier I told you industrial region, when the large number of industries are established close to each other and they are emerging this to share the benefit with each other, that is known as the industrial region। यानी जहां पे आप देखो बहुत सारे इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज किसी एरिया में इमर्ज हो, तो हम इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रीजन, इंडस्ट्रियल हब उस एरिया को बोला जाता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज आप देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश वहां पे है, क्योंकि इनको आपस में बेनिफिट शेयर कर रही है। एक इंडस्ट्री आप देखो प्रोडक्ट बना रही है, वो दूसरे का रॉ मटेरियल होता है। एक इंडस्ट्री आप देखो कोई प्रोडक्ट बना रही है, वो दूसरी इंडस्ट्री को इस्तेमाल हो रहा है। सपोज कोई लॉक इंडस्ट्री रॉक्स बना रही है, तो यहां पे आप देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो इनसे लॉक्स ले रही है ऑटोमोबाइल बनाने के लिए। यहां पे आप देखो कॉपर इंडस्ट्री, आप देखो यानी कॉपर बना रही है। यहां पे आप देखो वायर इंडस्ट्री, वो इनसे कॉपर लेके उस कॉपर को, जो स्मेल्टिंग कॉपर होता है, उसको वायर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना रहा है। यहां से आप देखो कोई अदर इंडस्ट्री जो ऑटोमोबाइल्स बना रही है, रेलवे इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, उनको उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाहिए, तो वो इनसे ले रही है। तो इसलिए आप देखो ये रॉ मटेरियल एक दूसरे का आपस में बेनिफिट शेयर कर रहे हैं ईच अदर, तो जिसकी वजह से आप देखो बहुत सारे इंडस्ट्रीज इमर्ज होते हैं, एंड दिस बिकम्स द इंडस्ट्रियल रीजन। तो इन द पीटर्सबर्ग देयर इज आल्सो, दिस इज नोन एज द इंडस्ट्रियल रीजन बिकॉज ऑफ दैट आयरन एंड स्टील प्लांट। टुडे यू नो दैट इज द this Pittsburgh has the large number of iron and steel plants. One of the best iron and steel plants are situated in the Pittsburgh. The reason behind this enjoys the locational factors. So because of this locational factors were this available for these iron and steel plants, and they are established, there emerge a large number of iron and steel plants. Because of these iron and steel plants, and one more thing, that is the other industries established close to each other, because they have the need of the these raw materials. So these iron steel plants fulfills the raw material, and other industries established around there, and there emerge the large number of industries, and this Pittsburgh becomes the industrial region today. So the that is why I mention here the Pittsburgh area has many factories other than iron steel plants. आज इसमें बहुत सारे iron steel plants के अलावा other industries है। The use of steel as their raw material to make the many different products such as railroad equipments and heavy machinery and rails, जो मैंने अभी आपको बोला कि ये आप देखो other industries in iron steel plant से आयरन लेके other equipments बना रही है, तो वो इनका raw material इस्तेमाल करके other equipments बना रही है, that is the railway equipments, automobile industries, log, domestic etc, agriculture, mining. So this is the reason there emerged the large number of industries. So this was the about this iron steel plant of Pittsburgh. So points to remember here, you have to remember that this is known as the steel city of this USA, because there are the large number of iron and steel plants in the why there are, because this area enjoys the locational advantages. इस area में locational advantages की वजह से बहुत सारे iron steel plants वजूद में आ गए, क्यों इनको water available है, this water transport भी available है, best shipping route यहाँ पे available है। तो आप देखो एक plant के लिए उसके locally raw material available है, और Minnesota माइनस raw material through these routes आता है, Great Lakes available है, Ohio, Monongahela and this rivers जो है यहाँ पे वो available है, ensured the sufficient supply of water. So ये plants यहाँ पे establish हो चुके हैं, और इन plants की वजह से other industries आ गए, lock industries, automobile, rail industries, तो ये one of the world best industrial region है Pittsburgh of USA. So this was the iron steel plant of Pittsburgh, और यहाँ इस Pittsburgh को जो mining iron ore की कमी जो
फुलफिल नहीं कर रही है वो माइनेसोटा माइनस है। माइनेसोटा माइनस कितने दूर है, दैट इज द 1500 किलोमीटर। कोल जो है उसको लोकली अवेलेबल होता है उसी के इर्द गिर्द। एंड वन मोर थिंग, दैट इज द वाटर जो सप्लाई कर रहा है वो ओहियो रिवर है और मोनोगेला रिवर है, और ये आप देखो इसको वाटर सप्लाई अवेलेबल करा रहे हैं। और उसके अलावा आप देखो जो यहाँ पे आप देखो इन बिटवीन पीटर्सबर्ग एंड माइनेसोटा माइनस देयर आर द ग्रेट लेक्स, दीज आर द 5 लेक्स, सुपीरियर लेक, आयरी लेक, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे ऑनटेरियो लेक और हुरॉन लेक एंड मिचिगन लेक, दीज आर दीज लार्जेस्ट ऑफ दीज 5 लेक्स। इट इज द हायर अपस्ट्रीम अदर देन अदर्स, यानी ये बहुत यानी बड़े लेक्स है तो इनको बोला जाता है ग्रेट लेक। सो दिस वाज द अबाउट द पीटर्सबर्ग आयरन एंड स्टील प्लांट।